हेलो गाइस, सो स्टार्ट करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर अपना न्यूमेरिकल पार्ट। पहला और दूसरा न्यूमेरिकल हमारे सामने। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी सीरीज जनरेटर रनिंग एट रेटेड स्पीड एंड एट नो लोड इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज, हाफ ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज, जीरो, ए वेरी लिटिल वोल्टेज। नाउ अगर हम बात करें डीसी जो सीरीज जनरेटर, इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्लियर है? सो अगर हम बात करते हैं, इट वर्क्स ऑन रेजिडुअल कॉन्सेप्ट, रेजिडुअल फ्लक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, और रेजिडुअल फ्लक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? इफ एक्साइटेशन इज जीरो, even there the voltage is not zero, now अगर अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, so we are just drawing the open circuit characteristic or the no load or the saturation curve. So it is a saturation curve where it is Eg is no load, and here we have the field excitation. Now when the field excitation is zero, क्लियर है? क्योंकि यहां पर जो दे रखा है नो लोड, क्योंकि नो लोड पर अगर हम बात करें इन केस ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, ये दिस इज योर डीसी सीरीज जनरेटर where the series field winding is connected in series with armature, so it is VT. Now it is EG, and this is your IA, this is your RSE, so it is ISE, and this is your I load. So at no load, IL or ISE or IA all are zero. Clear? That means this series field current, this ISE is equals to zero. When the field current is zero, that means the output is zero, that means there is no load connected. In case of self-excited DC generator, that is series generator, we have some amount of voltage. This some amount of voltage is called E residual. ठीक है? Now when field excitation is zero, the amount of voltage present in case of field poles or at the output is called residual voltage. Now when a load is connected, there will be load current, then the series field current and armature current, then the flux will be add up to this residual flux, then these add up flux, then when this added flux is gives you the EG, then EG increases, so on. क्लियर है? यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग क्या है? अगर हम किसी जनरेटर को लोड पे कनेक्ट करते हैं तो जो उस लोड करंट से जो फ्लक्स क्रिएट होता है, दैट इज एडिंग टू द रेजिडुअल फ्लक्स, देन दिस विल इंक्रीज द ईजी एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, सो देयर विल बी ईजी इंक्रीजेस। ठीक है? सो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज कॉल्ड ओसीसी कर्व। सो हमसे ये पूछा गया था कि नो लोड पर क्या होगा। सो नो लोड पर जो वोल्टेज होगा, नाउ दिस वोल्टेज इज 2 to 6 वोल्ट, 2 to 6 वोल्ट। ठीक है? यहां तक तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारे सामने क्या होगा? ए वेरी लिटिल वोल्टेज, दिस वेरी लिटिल वोल्टेज इज कॉल्ड ई रेजिडुअल, एंड दैट इज रेंज ऑफ 2 to 6 वोल्ट, 2 to 6 वोल्ट। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या सही होगा? डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है? नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर इज यूज्ड, पहला ऑप्शन है टू सप्लाई ट्रैक्शन लोड, टू सप्लाई इंडस्ट्रियल लोड एट कांस्टेंट वोल्टेज, नेक्स्ट है वोल्टेज एट द लोड एंड ऑफ द फीडर, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नाउ पहले तो मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं। अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं, डीसी सीरीज जनरेटर इज अ बैड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, इट कैन नॉट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, दैट्स व्हाई दिस लोड कांस्टेंट वोल्टेज इज जस्ट रिमूव्ड। ठीक है? यहां तक। नाउ अगर मैं डीसी सीरीज जनरेटर के एप्लीकेशन की बात करूं, डीसी सीरीज जनरेटर के जो एप्लीकेशन है उसको अगर मैं समझाता हूं, देन वी हैव सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज VT, इट इज IL, देन वी हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ up to this point the voltage is increasing as load current is increasing, voltage is increasing, so this region is called linear region of VI characteristic of VI curve. So this region is work as booster
Now in case of HVDC system, we are using this DC series generator to compensate drop, क्योंकि जो ड्रॉप होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वो लोड के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे लोड बढ़ेगा वैसे ड्रॉप बढ़ेगा। बट जो ये लीनियर पोर्शन है, इस लीनियर पोर्शन में जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज भी तो बढ़ता है। तो लीनियर रीजन में VI कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर रीजन को हम जो बोलते हैं बूस्टर। तो जो सीरीज जनरेटर एज ए बूस्टर काम करता है इन HVDC सिस्टम टू कंपनसेट voltage drop, because voltage drop is directly proportional to load, but in this region the load is directly proportional to voltage, so as load increases voltage also increases। क्लियर है यहां तक? नाउ दूसरा रीजन जो है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, इस रीजन को दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर रीजन। इस रीजन में जो है क्या है, जो करंट है वो कांस्टेंट हो रही है। सो इसका एग्जांपल है कांस्टेंट करंट सोर्स जनरेटर, कांस्टेंट करंट जनरेटर। ये यूज होता है आपका, अगर मैं एग्जांपल दूं इसका भी, वेल्डिंग जनरेटर। ठीक है यहां तक? और तीसरा एप्लीकेशन अगर बात करूं, पहला एप्लीकेशन तो समझ में आ गया होगा, एज ए बूस्टर in HVDC system, and second application is what, welding generator। ठीक है, तो ये जो है वो लीनियर रीजन वाला एप्लीकेशन है, और ये जो है नॉन लीनियर रीजन वाला एप्लीकेशन है VI कर्व का। और थर्ड जो है सप्लाइंग फील्ड करंट टू DC locomotive in regenerative braking। तो ये मेन एप्लीकेशन है आपके DC सीरीज जनरेटर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या सही निकल के आ रहा है, वोल्टेज एट द लोड एंड ऑफ द फीडर। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज व्हाइल रनिंग ऑन नो लोड? पहला ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, नेक्स्ट है शंट जनरेटर, लास्ट सी ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, और लास्ट जो है वो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को सही से पढ़ें, द ओनली DC generator which can have finite large voltage on no load is separately excited, सबसे अच्छा वोल्टेज अगर मैं बात करता हूं। क्लियर है? But the only DC generator which have least voltage, and that is called residual voltage, residual of 2 to 6 volt is called DC series generator। Now अगर हम DC सीरीज जनरेटर का डायग्राम देखेंगे, देन वी सी दैट दिस इज योर DC सीरीज जनरेटर डायग्राम। सो एट नो लोड दिस इज योर IA, दिस इज योर ISE, एंड दिस इज योर लोड करंट ना, सो RSE। नाउ एट नो लोड IL 0, IA 0, ISE 0, because all current are in same bag. All current are same because this connection is in series. So when there is no load, then if you draw the curve, open circuit characteristic curve, that is called EG versus IF, then this is the amount of voltage. This is the amount of voltage that is present. This amount of voltage is existing at
no load. So this is called residual voltage, residual, and this is of 2 to 6 volt, 2 to 6 volt range. ठीक है. So the only generator is what है. So ये इसका ड्रॉबैक भी है. ये जो डीसी सीरीज जनरेटर है इसका एक ड्रॉबैक है कि सबसे कम नो लोड वोल्टेज जो है वो डीसी सीरीज जनरेटर का ही मिलता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन का तो ए ऑप्शन क्लियर हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4. सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइट. A option only if the load current is zero, only if the load current is not zero, irrespective of the load current, and last option is none of these. So if you draw the diagram, अभी हमने यही डिस्कस किया था कि एक जो सीरीज जनरेटर है वो अपने आप को सेल्फ एक्साइट कब करेगा. दिस विल बी सेल्फ एक्साइट आवर सेल्फ या हिमसेल्फ. ठीक है. देन इट इज ईजी, दिस इज IE, दिस इज RSC or NSC, whatever you say, ISC, and this is your load current. Now when there will be load connected, there will be load connected when IL is not zero, IA is not zero, then ISC is not zero, then EG is directly proportional to phi f into omega. I mean omega is a constant, so as field flux increasing, EG increasing. Clear? Now when IF is zero, then EG is only, EG is residual, that is 2 to 6 volt, 2 to 6 volt. Clear है. So अगर आपको उसको self excite करना है, then you have to connect the load. You have to connect the load. So without load, there will be no possibility to self excite your DC series generator. Clear है. So यहाँ पर जो correct option होगा वो क्या होगा? Only if the load current is not zero. If load current is zero, then there will be small voltage. If the load current is zero, then the voltage across its terminal are very zero, are very less, because only residual voltage is existing. So for this question, the correct answer is B. ठीक है यहाँ तक. Now next question देखते हैं. Now fifth or sixth question देखते हैं. In a DC series generator, the terminal voltage increases in load will decreases, increases gradually, and then stay at rated voltage. C option है increases to a rated voltage and then may decrease, और last option है remain nearly constant. तो अगर हम जो DC सीरीज जनरेटर है उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करें, then VT versus IL characteristic, then the curve is like that. This curve is like that. Is it okay? Now this is IL rated. So in this region, in this first region, as IL increases, VL increases, so it is called linear region, and it works as a booster for HVDC system. But in this region, if you see this thing, in this region, as IL increases, then the VL is decreasing like that. First it's going to the maximum point, it is maximum point, then after that the voltage is now decreasing, so VL decreasing. Clear? And this region is work as a welding generator or constant current generator. ठीक है यहाँ तक. तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन को. इन डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विल इंक्रीज इन लोड फ्रॉम 0 to rated value it will increase. 0 to rated value this voltage gets increasing, but after the rated value this voltage goes decreasing. क्लियर है. या तो ऐसा हो सकता है कि आप रेटेड वोल्टेज लगाओ, देन इट इज जस्ट इंक्रीज एंड कांस्टेंट, बट यू अप्लाई द लोड ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू, देन दिस टर्मिनल वोल्टेज में फॉल्स. क्लियर है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है वो सी बिल्कुल सही दे रहा है. इंक्रीजेस टू ए रेटेड वोल्टेज एंड देन मे डिक्रीजेस. सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू. द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू रेटेड करंट इज कॉल्ड जस्ट V rated. ठीक है. Now next question, the poorest voltage regulation exists in case of which of the following generators? Now compound generator, shunt generator, series generator और high generator. तो high generator कुछ ऐसा वर्ड मैंने सुना नहीं है. So क्वेश्चन को समझते हैं. Now in case of your DC series generator,
For certain range, your terminal voltage increases, and for some certain region, that is when load is greater than the rated value, this terminal voltage decreases. So it's terminal voltage is variable with respect to load, so its voltage regulation is minimum. It is not providing the constant voltage regulation. So for this question, the correct option is C. Clear है? Next question देखते हैं 7th और 8th. The constant current region of external VI characteristic of a series generator is best suited for line drop compensation, welding, rectification, and drilling. So if you remember, the characteristic we have drawn many times. So characteristic is linear region. This is linear region is suited for what? Booster. That is line drop compensation. Okay, this is first point. And the second point, the constant current region, that is called non-linear region. This is known as for constant current region. So it is suitable for welding generator, arc welding generator. Okay. Now if you have the graph of this characteristic, then the curve will look like that. This is IL. So curve is like that. First it is increasing, then it is decreasing. So it is the region first, and this is your region second. Okay. So this second region is suitable for arc welding. So correct option is B. Okay. Next question देखते हैं. Series field winding of a DC machine. First statement has less number of turns. Second is thick, or third one is what? Carries large current. Correct amongst the given is oblique are only 1, 1 to 3, 2 3 and 1 3 last option. ठीक है. So solve करते हैं इस क्वेश्चन को. now अगर मैं बात करता हूँ, in case of series generator, the load current is equals to the armature current, so ISC. So it carries, so field carries large current because these are connected in series. So current is proportional to area or dia. Then current increases, dia increases. So first statement is the second statement is correct. ठीक है यहाँ तक thick. So like that, if your series field winding is this, then the shunt field winding, this is NSE, then the SHS is what? This is like NSH is like that. ठीक है. Then the next point is what? Has less number of turns. Now since the current in the series field winding is high, then the resistance made by this winding should be very less. So it is made up of less number of turn of thick wire, so that the losses, copper losses, are less. Now why? The resistance is directly proportional to number of turns is less, so R is less. Now the R series is only 0.01 ohm. Clear है? So ये जो winding है, series field winding, it is thick and it carries large current also. Third is also correct, and has less number of turn to minimize the copper losses. Clear? So all options are correct. So first, second, third, all are correct, and this is given in B option. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो B बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ 9th और 10th क्वेश्चन समझते हैं. ए सीरीज जनरेटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए फीडर ऑफ 0.5 resistance to boost the voltage. The induced voltage is given by this EG equals to 0.61 IA. RA is the armature resistance is this, and the series field winding resistance is 0.3. Find the voltage boost up by the
generator when delivering the load current of 400 ampere. The options are 30, 40, 60 and 90. Now solve करते हैं. Now in case of series generator, the equation is this. This is your series generator. This is your series generator. So it is RSC. Now if you apply the KVL, then we have the EG minus IARA minus IARSE minus V equals to 0. So EG minus IARA plus RSC equals to V. Is it okay? Now EG is how much that is given to you, 0.61 now. Solving here. So it is EG 0.61 IA. Is it okay? 0.6 IA. Okay. I just take it as 0.6. Then it is minus IA common here. Then IA is common. RA is how much? 0.2. And RSC is how much? 0.3 plus 0.3. That is equals to V. Now just take IA common from the whole. So IA, that is 0.6 minus 0.5, that is equals to V. That is equals to V. Is it okay? So it is IA into 0.1 equals to V. Now you need to this V. Now in case of series generator, the IA and IL, that is equals to ISC. Is it okay? Then load current is how much? 400. So IA is 400 into 0.1, that is equals to V. So V is how much? 40 volt. So this generator is now raising or compensating how much voltage? 40 volt. So correct option is B. Okay. Now next question, the following type of DC generator is most suitable as booster. Now the best example to make booster is series generator, and in the linear portion of the external VI characteristic, it work as the series booster, but in the non-linear region or in the constant current region, it works as a बैरलिंग जनरेटर और कांस्टेंट करंट जनरेटर. ठीक है, तो आई होप सो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होगी. दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक, द VT वर्सेस IL characteristic, that we have the characteristic like that. So in this region it is behaving as a booster to compensate line drop in case of HVDC transmission system, but in case of this region this is work as Wehrling generator. Is it okay? In Wehrling generator we require the high constant current to make the electrode current contact. Clear? But in the booster region we require load current so that the voltage is also increases. So correct option is what? A. ठीक है यहाँ तक? I hope so ये क्वेश्चन समझ में आ गया हूँ. ठीक है यहाँ तक?